anybody sitting on this Vyasasan, okay, you can imagine a Vyasasan here, okay, must have this qualification, okay. And apart from that, we should primarily be involved in these two things, okay. These are the fundamental principles, okay. uh, and those are okay. The two qualifications are required. First, it should be following the goal regulatory principles, okay. And the second thing is as follows, okay. He should be very well versed with the shastras, okay. And primarily, okay, in terms of Shravanam and Kirtanam, okay, primarily, okay, well versed with Shastras and Shravanam Kirtanam, okay. He must have heard from a bona fide authority, okay, not from anybody, okay, but from a bona fide authority, okay. Apart from that, yeah, so what is the sign of any concept being properly understood? Okay, what is the sign? When you can explain it clearly to others, that means you have understood, okay, the concept well. If you are not able to explain or teach somebody, that means you have not understood the concept clearly, okay. So Sutta Goswami was the reason Sutta Goswami was bona fide, that the sages are saying, okay, all of them, that you are bona fide to Sutta Goswami because this reason is yeah, he heard it. Sutta Goswami has heard it from a bona fide source. At the same time, he is able to explain it. Okay, so इसमें श्रवणम कीर्तनम दोनों आ गया. Okay, श्रवणम means bona fide source से सुनना, जो हम सुनते हैं in the disciplic succession, be it Srila Prabhupada or Maharaj, okay, or any Srila Vaishnava, and at the same time we are able to explain it to other, the clear concept we have understood, okay. Okay, this is the real fact, okay. हाँ समझा, हाँ और हाँ मैं सुना समझ गया, don't assume things, okay. When you are able to explain it properly and clearly, that means you understood the concept well, okay. So this is basically the summum bonum. Summum bonum is basically the gist of this verse, okay. Yeah. So yeah, in the following the several points I will be covering. I made wonderful sectors of the things systematically, so that I can add immense value to you, and present it to you, so that it is mutually beneficial for to advancement in devotional service to all of us, okay. Yeah. Yeah. Now comes the first and foremost important part of principle, that this knowledge of shastras, as we know, as we have seen in Bhagavad Gita, it tends to get lost. It tends to get lost over a period of time. Okay, so one has to be always, always be, always be, in uh, in connection to the standard thing, always. Okay, I'll give you a classic example what I mean. One should be always in connection to the standard thing. Okay, like I can give you a classic example. बचपन में हम वो एक गेम खेलते थे, फोन गेम खेलते थे, राइट. हाँ, कि हम ऐसा राउंड में बैठ के एक दूसरे के कान में बोलते थे, हाँ, धीरे से विस्पर करते थे. ओके, सो उसमें क्या होता था कि जब भी हम 8-10 लोग हैं, उसमें से जो एक्चुअल मैसेज है 10वें के पास होके उसमें अलग ही होके तिखट मीठ लग के कुछ अलग ही हो जाता है. Okay, so then he becomes out. उसने सही नहीं बोला था. Okay, so this is how the knowledge get lost. Okay, so what I'm trying to say is, okay, always never always be in touch with the actual things, like say कि मतलब like a textbook or shastras. Okay, always be in touch with that. Okay, always be in touch with that, never forget that. Okay, because क्या होगा कि I can give you a classic example, okay, of myself only. When I was young, okay, so क्या था कि my father used to take my studies, okay, okay, of course बच्चे लोग को parents लेते हैं, पढ़ाई क्या है, okay, so एक craft का chapter था, okay, तो उसमें से ना 50 पट्टी, ऐसा 5 सेंटीमीटर का पट्टी काटना था, 50, ओके. सो क्या हो गया उसमें सीन कि मैंने 5 सेंटीमीटर का पहला पट्टी काटा, ओके, फिर मैंने दूसरा काटा वो फर्स्ट का रेफरेंस लेके, हाँ, फिर तीसरा मैंने काटा ये सेकंड का रेफरेंस लेके, चौथा काटा ये पीछे पीछे का ऐसा रेफरेंस लेके मैंने काटा 50. जब भी मैंने 50 पट्टी मेजर किया, ओके, ग्राफ में, तो वो 5 नहीं 6 सेंटीमीटर हो गया था. ओके,
कि मैंने क्या किया, वो पहला जो फर्स्ट पट्टी में से सेकंड पट्टी था वो 5.1 था, 0.5 नहीं था, 5.1 था, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, फिर उसके बाद वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। ओके, सो देन माय फादर गिव मी द वन ऑफ द पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ओके, that whenever you cut all the 50 strips, you should take the first reference. ये 5 का रेफरेंस लेके दूसरा काटो, ये दूसरा साइड में रखो, फिर ये 5 का लेके सेकंड काटो, थर्ड काटो, so that all are same. Okay, I was very young, naive, naive, naive. Okay, I made this mistake. Okay, so yeah. Yeah, so this is what the biggest learning all through my life. Okay, so same thing goes with shastras. Okay, ये जो अपना ये जो अपना स्पिरिचुअल लाइफ है उसको गुरु साधु शास्त्र से रेफरेंस करते जाना है। ओके, व्हाई? बिकॉज कभी कभी यू नो इस्कॉन इज अ बड़ा फैमिली, इट्स अ ह्यूज फैमिली। ओके, तो क्या होता है, ये पट्टी की तरह, नेवर फॉरगेट दिस एग्जांपल, हाँ, पट्टी की तरह धीरे धीरे होके वो आउटपुट सीधा 5 सेंटीमीटर का सीधा 6 सेंटीमीटर हो गया, एक्चुअल रेफरेंस से नहीं लिया तो। ओके, सो इन अ सेंस दैट कि क्या हो रहा है, एवरीथिंग एंड द सीक्रेट, आई गिव यू द रियल सीक्रेट ऑफ इट। ओके, उसका सीक्रेट ये है कि ऑलवेज कीप क्रॉस चेकिंग ऑन थिंग्स। ओके, नो, आई एम नॉट सेइंग कि यू डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, दिस इज द साइन ऑफ योर शार्पनेस। ओके, ऑलवेज स्टार्ट क्रॉस चेकिंग, मतलब किसी ने कोई वर्ड्स बोला है या कोई मंत्र बोला है या उच्चारण किया है, सपोज से शिक्षाष्टकम प्रेयर्स होवे या 10th ऑफ सिंपल शिक्षाष्टकम प्रेयर्स होवे या दामोदर अष्टकम हो या किसका, ओके, उसका प्रोनाउंसिएशन बराबर है कि नहीं। ओके, मतलब क्या होता है कि ओके, इट माइट साउंड फनी कि अगर जो कि एक्चुअली हम खुद को पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि एक दिन ऐसा क्या होगा कि हम खाली सुनते हैं, करते आ रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे, हाँ, फिर एक आदमी जो 10वां आदमी या 100वां आदमी या 1000वां आदमी है ना, उसका अलग ही दामोदर अष्टकम है, उसका शिक्षाष्टकम ही पूरा चेंज हो गया है। ओके, 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 रेफरेंस नहीं ले रहे, उसने खाली सुनते सुनते, एक ने थोड़ा गलती किया, 5% गलती किया प्रोनाउंसिएशन में और उच्चारण में, उसने करते करते फिर अपने नया दामोदर अष्टकम और शिक्षाष्टकम या तुलसी आरती, गुरु पूजा या संध्या आरती हो गया। ओके, so always cross check, verify, not to correct but yeah, okay, और दूसरा बात कि सामने वाला गलती करता है तो do not follow the गलती, okay, you be correct, you follow the actual standard what you have read and study. Okay, so much so कि this is why you know ISKCON में अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाया है। ओके, हाँ, देवकीनंदन प्रभु का एक वीडियो है, you know, there's something called interjections. Okay, there is a ISKCON ministry for prasadam. Okay, prasadam standards, ISKCON ministry for deity worship standards, ISKCON ministry for kirtan standards. So we should be in touch with that. Okay, those read that. Okay, otherwise I give you a classic example, huh? You know that this is something called interjections. Okay, हाँ, क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद, these are called interjections. Okay, as per the ISKCON ministry, this this kirtan ministry, this is not allowed. Okay, and you must have seen that video, देवकीनंदन प्रभु ने एक ऐसा टपली मारा एक संगर संकीर्तन में एक लड़के को, वो बीच में इंटरजेक्शन किया, हरे हरे, तो उसका मस्ती में। ओके, हाँ, एक वीडियो भी है, टपली मारा, बोलते हैं नो इंटरजेक्शंस। ओके, प्रभुपाद ने बोला है कैसा, फिर बोलो हरे कृष्णा, नहीं, बोलो नहीं। ओके, ये नो एडिशन, नो इंटरजेक्शन, प्योर मंत्र, प्योर खाली। ओके, वरना फिर अलग अलग हो जाते हैं। ओके, या सो एवरीथिंग वी हैव टू बी ओके, so much so that you know I like to travel around and meet new people and new places, so I've been to so many ISKCON। तो क्या होता है, so much so I would not name it। ओके, क्या हो गया है, कितनी जगह पे यू नो सपोज से 100% का जो प्रॉपर प्रिंसिपल्स में से 90 होता है, 80 होता है, 60 होता है, मैंने 10% वाला भी ISKCON देखा है, खाली 10% बोलने के लिए ISKCON सेंटर है। ओके, so much so that I fear that, मैं तो उससे कनेक्टेड नहीं हो, जाता नहीं हूँ, हाँ, so much so that one day I fear that in due course that will become a स्वामीनारायण मंदिर। ओके, और ओम शांति ओम शिवानी मंदिर। ओके, मतलब हाँ, आई मीन ये हार्डली इज फॉलोड। ओके, वो सेम थिंग, वो पट्टी ऐसा नहीं, वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं, एक ने बोला उसका उसने थोड़ा समझा, उसने थोड़ा समझा, कर करके कहाँ पहुंच गया है। ओके, सो ISKCON will so many standards will be converted into Om Shanti and Bapa Sitaram and स्वामीनारायण, हाँ, स्वामीनारायण। ओके, मतलब वैसा है, why? Because they don't say stick to the thing। ओके, whereas you know we should have a nature कि वो गलती कर रहा है तो भी हम stick to the standard। Okay, so that it does not get polluted soon।
Okay, so these are the very important point which should always keep in mind, okay, while being in Krishna consciousness. Okay, yeah. Yeah, okay. And one more thing, very important point now. The Prabhupada says this, huh? Prabhupada was in a morning walk, okay. So it is said that don't be jiddi in life, okay. You should not be stubborn, okay. As we know, the one thing is constant in life is the change, okay. You have to change. Why? Because change is very dear to Krishna. We want to do everything which is dear to Krishna, okay. Yeah, of course, we are doing it to please Krishna. But the change, if we change, if we are flexible, flexible, and if we change and adapt and adjust to people and situation, and please, that's very dear to Krishna, very dear to Krishna. Okay, change. Okay, so on this very point, Prabhupada said very powerful thing. Okay, Prabhupada was in a morning walk. Okay, so with few of his disciples. Okay, so in the fields. Okay, so fields, उसमें dry grass वगैरह होता है, fields. Yeah. Okay, so उसमें क्या था कि there was a stool lying. Okay, तो उसमें एक ये ऐसा कैसा earthworm जैसा कीड़ा था. Okay, so अंदर ऐसा घूम रहा था. Okay, so ये स्वरूपा ने वन ऑफ डिसाइबल को बोला केन से, लकड़ी से, हाँ, बोलते कीड़े को निकालो स्टूल में से. तो वो सरप्राइज हो गई, क्या ये कौन सा सेवा हो गया, ऐसा भी सेवा होता है क्या? हाँ, तो निकाला. ओके, ओके, निकाला. तो फिर तो बोला प्रभुपद, प्रभुपद बोल रहे निकाला. हाँ, फिर उसको साइड में किया. हाँ, तो वो ऐसा ऐसा वो रेंग के ऐसा बाहर आ गया. हाँ, हाँ, फिर अभी फ्यू सेकेंड्स में घूम फिर के वापिस अंदर गया, घुस गया सेम में और रेस्ट हो गया. ओके, प्रभुपद से दिस इज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नोबडी वांट्स टू चेंज. हाँ, okay, they act like a stool, stubborn, जिद्दी, like a stool in the womb. कोई अच्छा बता रहा है, सिखा रहा है, चेंज करने को बोलता है, विच इज डियर टू कृष्णा, फिर भी स्टूल में वर्म में ही जाना है. नहीं, हम स्टूल में सही है, हमारा ये यही दुनिया, यही हमारा लाइफ. ओके, सो शुड नॉट बी लाइक, वी शुड प्लीज कृष्णा. Someone, okay, so powerful example by our beloved Srila Prabhupada. Okay, so we should not be like a worm in a stool. We should be adaptable, changeable, flexible, because change is very dear to Krishna and we want to please our dear Krishna. Okay, yeah. Okay, yeah, so that's okay. Another thing, okay, now in one of the lecture of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, okay, in the Prerna lecture, he was asked by a youngster when Maharaj was talking about chanting the holy name. So okay, so he said that why not why not why not you tell us to chant in the morning, why not chant in the late after 10-11. Okay, he was like a very flamboyant guy, party guy, party boy. Okay, flamboyant personality, colored hairs, and a hep kind of look. Okay, so हाँ, तो उनको ऐसा बोला, तो उनको उनको ऐसा बोला कि महाराज ने ऐसा रिप्लाई दिया. ओके, okay, so you throw parties, big parties. Okay, okay, so let's have one of the parties at 8 a.m. in the morning. Okay, Maharaj told you. Okay, so he told oh Maharaj, no fun. Oh, there are girls around. Okay, it needs darkness. Okay, in the sunlight at 8 in the morning, no fun. Party should be at night, not in the morning. So Maharaj says, here is your answer. Everything has its time. Mala has its time. Okay, वो slot में ही होना चाहिए. Party has its time. वो slot में ही होना चाहिए. पार्टी का मजा ना सुबह आएगा, माला का ना मजा रात को आएगा. Okay, so okay, everything has its time. Okay, yeah. So okay, so this is called regulations. Okay, कभी भी कुछ भी करना है बॉडी पे, कभी बॉडी एंड अवर लाइफ में नहीं चलता. एवरीथिंग like how सोने का has a time, 10 p.m. सोने का also has a time. Everything in our दिनचर्या has a time. कभी भी मुंह उठा कुछ भी नहीं करना है. Okay, so everything has its time. Okay, yeah. So one of the things we have to do is now about the chanting. Okay, yeah, chanting के लिए as wonderfully you desire to know more about chanting is I'm telling you the extract from several japa retreats, like we have japa retreats where there are 3 days camps in Vada Farm and different outings just for japa reform. Okay, seminars, lectures, all focusing on japa. Okay, yeah, and before that our entire
schedule, okay, of our 24 hours should be revolved around 2 hours of japa. Okay, entire 24 hours should be revolved around the 2 hours of japa. Why? Because there's a very powerful reason. Okay, we guys are we guys have left our families. Okay, we guys are if not left, then away from our families, away from sense gratification. Okay, away from any from any emotional support. Okay, and in a wild crazy world. Okay, so sometimes we wonder, where are we going to do, how are we going to survive, how am I going to continue, will I be able to survive, will I be able to continue. Okay, so we sometimes get stressed. It's the human nature. Okay, okay, how are we going to do in this mad crazy world. Okay, so the answer to it is a very simple, profound and powerful. Never forget this statement. Okay, 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 कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कौन अपना ध्यान रखेगा. Okay, so the answer to this is, okay, that you just have to do one thing and you are taken care of. Huh? Just one thing, simple. You take care of the chanting and chanting will take care of you. Now you might say that Krishna will take care of me, but Krishna in the Kali Yuga is in the form of the holy name. Okay, okay. So you have to take care of chanting, and chanting will take care of you. कोई भी सिचुएशन में, चाहे पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स के बीच में गिर गए हैं या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल ट्रॉमास. ओके, ये सब सॉल्यूशन. ओके, सब सॉल्यूशन का में हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे बाहर आएंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे, उसका हमारा कैसे ध्यान रखेंगे हमारा हेल्थ का, फिजिकली, मेंटली, साइकोसोमेटिकली, मतलब बॉडी और माइंड का कनेक्टेड. विल वी सर्वाइव, विल वी नॉट, सो मेनी क्वेश्चंस इन द माइंड. ओके, कौन ध्यान रखेगा अपना. कृष्ण, वी आर नॉट सो प्योर डिवोटीज लाइक महाजन. कृष्ण का डायरेक्टली आके अपने लाइक द पीपल इन द शास्त्र गोस्वामी, ऐसा नहीं. ओके, so हम क्या करेंगे, sometimes we wonder. Okay, so answer is take care of the chanting, simple, and chanting will take care of you. And how can you take care of the chanting? Okay, दो घंटे का you have to take care. Krishna will take care of your remaining 22 hours. Okay, 2 घंटे का you have to take care. Okay, and how can you take care of the chanting? उसके टाइम पे होना चाहिए. Okay, not कि अपने टाइम पे रात को करो, दोपहर को करो, वैसा नहीं. ओके, अपने टाइम पे, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ चैंटिंग. ओके, कभी भी 16 बोला है ना, मैं 24 घंटे में कभी भी करूँ, रात को करूँ, वैसा नहीं. दैट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ चैंटिंग. उसके टाइम पे है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द चैंटिंग. ऑल्सो never forget. And yeah, so some of the extracts from those retreats are, एक इसका ये वो बनाया है, 3 P's of chanting. 3 P's of chanting इसका फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको. ओके, 3 P's of chanting. Okay, firstly is the posture. Okay, nobody is telling you nobody is telling you to sit in padmasan. Okay, or like a yogi and chant. No, nobody is telling you that, but still your posture should be good enough and straight. Okay, still it should be good enough and straight. Why? And this is directly coming from Prabhupada. Okay, and it's good to chant with a japa tape on of Prabhupada. Okay, because Prabhupada is also chanting with us. Usme you must have heard several times, each one of you Prabhus. Prabhupada says, बीच बीच में, sit straight, sit straight. Tell me Prabhus, सुना है, सुना है, सुना है? Yes, it's a question to you. सुना है? Sit straight. जपा टेप सुनोगे ना, चालू चैंटिंग के बीच में प्रभुपाद बोलते हैं, द प्योर डिवोटी वो बोल सकते, हम नहीं. हाँ, सिट स्ट्रेट. कोई ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है, उल्टा बैठा है, उल्टा कर रहा है, आड़ा बैठा है, टेढ़ा बैठा है, किधर है. ओके, वैसा. ओके, सो प्रभुपाद से सिट स्ट्रेट. सो one of the first P, posture is important. Second is pronunciation, उच्चारण. हाँ, हरे कृष्णा, कोई हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे, ऐसा होता है. हरे कृष्णो, हरे कृष्णो, कृष्णो कृष्णो हरे, ऐसा. मतलब सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, ऐसा नहीं. ओके, और इसका भी, हाँ, इसका भी ये जीपीसी ने स्टैंडर्ड लगाया इसका. ओके, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामो, ऐसा नहीं है. वो जीपीसी स्टैंडर्ड के हिसाब से
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, वो अलग ही मंत्र चल रहा है। ओके, वैसा नहीं, जीबीसी स्टैंडर्ड ये सब है, रामो नहीं। ओ सी अगेन, अगेन आई एम क्लैरिफाइंग द थिंग, आई एम वेरी बारीका से, ओके, न्यूआंसेस। ये जब भी हम कीर्तन करते हैं ना, तो एवरी स्पीकर हैज इट्स ओन वे ऑफ चैंटिंग। कोई राम रामो बोलते हैं, ओके, उसमें तो चल जाएगा, दैट इज नथिंग रॉन्ग, everybody and Krishna understands that, okay, because it's general, because it is varied to different culture, अलग अलग कंट्री का प्रोनाउंसिएशन, किसी का एक्सेंट अलग होता है, उसके हिसाब से चलो कृष्णा एक्सेप्ट दैट। बट ये है पर्सनल चैंटिंग की बात कर रही है, यू आर देयर, यू कैन नॉट बी हैविंग हरे रामा हरे रामो, वैसा नहीं, देयर यू शुड फॉलो द जीबीसी साउंड, ये पर्सनल चैंटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें रामो रामा कुछ भी, कृष्णा एक्सेप्ट, ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, या, सो दिस इज द, ओके, ये हो गया प्रोनाउंसिएशन, पहला पॉस्चर, फिर उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर, ओके, जो हम प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे उस बहाने हम सुनेंगे। What is असली chanting? There are two types of chanting, असली chanting and नकली chanting, no third chanting, only two categories chanting में divide, एक असली माल and नकली माल, okay, असली chanting is के you know, before ISKCON also I used to chant mantras अलग अलग, like say ओम नमः शिवाय and राम, तो ऐसा मैं 1000 मंत्र बोल दिया, राम 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 1000, हाँ, मन में, लेकिन बाहर नहीं, ओके, और ऐसा कितना हजार आई मीन माला करता था, पर ये अंदर वाला, ओके, तो हाउ इज इस्कॉन डिफरेंट है, वही हम मन में वाला करते हैं, तो हाउ इज इस्कॉन डिफरेंट, दिस इज अ साइंस, ओके, एक एक सिलेबल सुनना है, इफ यू आर नॉट हियरिंग, यू आर जस्ट डूइंग ओम नमः शिवाय एंड राम, उतना इफेक्ट, every word should be heard, so much so, okay, there yeah, there we chant with devotees na, I have heard कि कितने devotees जो मंत्र सुना नहीं, किधर माइंड किधर और भागा है ना, तो you don't change the beats, वो आगे काउंट नहीं करते, वो रिपीट, जब तक सुना नहीं है पूरा माइंड इधर नहीं, तब तक वो काउंट भी नहीं करते आगे, ओके, एंड इट शुड बी हर्ड क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, ओके, एंड इट शुड नॉट अनॉय यू, ओके, इट शुड नॉट अनॉय यू, अरे कितना जोर से बोल रहा है, okay, it should be excited, wow, he's so excited, I will chant even loudly, okay, where there we chant, okay, in the temple, तो क्या होता है, you know, it's a loud uproar like a kirtan ka, it's a loud uproar of during chanting, not somebody wala chanting, so not somebody wala chanting, that's a loud uproar, everybody is shouting, and okay, everybody is chanting loudly, ओके, हाँ, उसमें एक चीज याद रखना है, लाउड एंड क्लियर, बट अपना मंत्र सुनना है, किसी और का नहीं, ओके, दैट यू हैव टू टेक केयर, ओके, so you should be enthusiastic, he can chant this loud and clear for Krishna, I will chant more loud and clear for Krishna, okay, so this is the actual coming from Prabhupada, okay, Prabhupada himself chant loud and clear, Prabhupada ने कहा, जपा टेप में देखा, मन में बोल रहे, किसी को सुना ही नहीं, जपा टेप ही नहीं बना, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मन में बोल रहे ना, ऐसा हम कैसे राम 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 1000 टाइम मन में करते थे, ओम नमः शिवाय कैसे 1000, नो 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 नो, रॉन्ग जपा, दैट्स नॉट जपा, ये माला किया है, उसका वो निशानी पे नहीं लग रहा है बुलेट, वो मतलब एम्प्टी बुलेट्स को कैसा बिना बिना बुलेट के टक 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 करोगे, कुछ नहीं होगा सामने, तो वैसा वैसा मार रहे हो, मन में बोल रहे हो ना हरे कृष्ण मंत्र, तो ऐसा टक 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 खाली बुलेट मार रहे हो, सामने कुछ नहीं हो रहा है, ओके, बुलेट निशान पे ठाक ठाक ठाक, टारगेट वो होने रप्चर होने के लिए, हाँ, उसके लिए इट शुड बी लाउड एंड क्लियर, ओके, एंड एनकरेज ईच अदर, कोई सो रहा है तो उसको जगाओ, ओके, यू शुड हेल्प ईच अदर इन जपा, ओके, yeah, so so there's another there's a one wonderful devotee Sudama Prabhu, हाँ, वो ही इज सो मच, इस ब्रह्मचारी को भी ना इतना चैंटिंग का टेस्ट है, ही चैंट्स एवरी मंत्र लाउडली, मतलब एक उनको 4 घंटा लगता है मिनिमम 16 माला करने को, एंड ही डज नॉट चैंट 16 माला, ऑफ कोर्स इस ब्रह्मचारी ही चैंट्स मोर, बट 4 घंटा 16 माला करते, 2 घंटा नहीं, बिकॉज हिज एवरी मंत्र इज लाइक दैट, हाँ, ऐसा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ईच मंत्र अपना तो इसमें आधा माला हो जाता है, ओके, तो ही चांट्स ईच मंत्र लाइक दिस, ओके, इतना टेस्ट है फॉर हिज होली नेम, ओके, ओके, या, सो हाँ, हाँ, so when His Holiness Radhanath Swami Maharaj says that if you chant your morning time, morning में 16 माला कंप्लीट किया, मॉर्निंग में, हाँ, एंड यू नो मॉर्निंग 9 के पहले 10 के पहले, देन कृष्णा ऑर्केस्ट्रेट योर लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट, वो ऑर्केस्ट्रा बजता है, हमने ऑर्केस्ट्रा देखा है बचपन में, आजकल का मैं बचपन में देखा है, तो एक आदमी ऐसा ऐसा करते रहता है, हाँ, उसका मतलब क्या कर रहा है, वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पियानो वाले को, पिच वाले को, ट्रम्पेट वाले को, पिच ऊपर लो, नीचे लो, ऊपर लो,
ओके, सो कृष्णा विल ऑर्केस्ट्रेट योर लाइफ, इधर जाओ, ऐसा करो, आपका सक्सेस होगा, पूरा दिन आपका वो शेड्यूल करेंगे जो 16 माला सुबह होगा। वो सेज सदानंद स्वामी महाराज थे, भगवान करे, अपने को तो शेड्यूल बराबर जमता भी नहीं करने और फॉलो भी नहीं करते, ये तो भगवान अपने लिए करेंगे, ऐसा कर पूरा मस्त सेट करके देंगे पूरा दिन, जो सुबह 16 माला हो रहा है तो। ओके, या and one of the powerful fundamental most interesting principle among devotees which we should have is Radhanath Swami Maharaj told is one of the yatra. Okay, that the core principle on which the bhakti should be is friendship, very strong friendship. Okay, very strong friendship. Okay, Maharaj says you should dance together. Okay, okay, you should chant together, you to eat prasadam together. Okay, you should do seva together. Okay, okay, so the more you come, you should discuss Krishna katha together, you should distribute books together, you should preach together. Okay, so this togetherness brings friendship. मैं वो कोने में करूंगा माला, मैं वो कोने में माला करूंगा, मैं वो कोने में खाना प्रसाद दूंगा, और मैं वो कोने में सेवा करूंगा, नो. ओके, महाराज emphasize not वो कोना, महाराज emphasize togetherness. Why? Together brings friendship. Okay, and friendship brings love. Okay, and one of the powerful tool of preaching is which is always His Holiness Radha Swami Maharaj follows is give love to love to the people of the world. The most powerful tool of preaching, give love to the people. Okay, okay, because nobody gets love in this world. Okay, there is world so much scarcity of the love in this world. Okay, बहुत स्कैरसिटी है. ओके, और तुम ऐसा सामान लाए और ऐसा माल लाए हो कि जो सबको चाहिए, जिसका कमी है. ओके, बोलते हैं ना कि वो डिमांड सप्लाई का मालूम है ना, कि जिसका सप्लाई कम उसका डिमांड ज्यादा. ओके, पानी कोई वैल्यू नहीं करता है. हाँ, सोना कम है दुनिया में पानी से, है कि नहीं? तो भाव दो, अगर इसका कमी है तो आपका अच्छे भाव में बिकेगा. मतलब गिव लव टू द पीपल इन शॉर्ट. ओके, सो यू नीड टू गिव द लव टू द पीपल. Okay, yeah, so this is how you preach. Okay, and genuine love. Okay, not the acting wala. Okay, because see people can sense it. Okay, कि मतलब मैं मीठा बोलूं और डिप्लोमेटिकली बात करूं, कि जस्ट खाली मेरा काम करे. नो, गिव genuine love. And what is love का definition क्या है? It should be selfless. Okay, I give prasadam to him. Example दे रहा हूँ. Say he's a person I met, or he's a person. I give prasadam to him, I serve him, I tell him something wonderful, I want nothing in return. Okay, I give prasadam, मैं जब भी देता हूँ, nothing in return, that is love. Okay, so this is the one of the thing you follow. Okay, now another quickly few points I would like to continue. Okay, yeah. Okay, yeah, now I would emphasize on some of the points of the book distribution. Okay, yeah, that while distributing books you should have why we're doing book distribution, not just for money, for preaching. So uske liye you should, very important to give love. Okay, yeah, and most important thing, ma jana yena gata paranta, wo hai na, yeah, this verse. Okay, so what I'm trying to say is ki, always focus on the rich and educated class. Okay, not the poor people. I'm not telling that you have to bereft them from bhakti. See, I give you a classic example. Why I tell you this? I have a reason to it. Okay, I started reading Bhagavad Gita because I saw multi-millionaires and billionaires reading, successful people reading. That is why. Okay, कोई गरीब आदमी pauper जो भगवद गीता पढ़ता, okay, so I would have not come to Krishna consciousness. Because उसका देख के. Okay, why I am reading Bhagavad Gita daily, 365 days, for years to come and future to come. Why? Because multi-millions, most successful people on this planet read this. Why? I want to become successful. Okay, so simple logic. Okay, so always while distributing books, focus on rich and educated class first. This is what then the middle class and the poor will automatically follow. Okay, so you should know that kiske, who has the deeper pockets. Okay, don't go randomly nahi. Okay, this is for first point of book distribution. Second thing is, okay, whenever I sell book, whenever I distribute books, okay, I tell him the cost. You don't have to waste time. Like say किसी ने महाभारत टच भी किया ना, मैं सीधा बोलता है ऐसे 5 से 50, उसने जस्ट ऐसा देखा है, टच ही करने जा रहा है. ओके, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम. ओके, फिर किसी ने श्रीमद् टच किया ऐसे 500 रुपए. ओके, so otherwise we keep preaching and wasting time. पता चला he does not have 5 rupees also in his pocket. Okay, now you might say that we are supposed to give love, तो फिर why are we counting money? No, but here we हम preaching नहीं, हम book distribution कर रहे हैं ना, हम मतलब numbers भी matter करता है ना.
Okay, so we need to this is the technique I follow. I'm saying you may follow if you like or your wish. I tell him the cost before in. I don't keep preaching for hours together. Imagine करो मैंने एक एक घंटे का सबको प्रीच किया, सपोज 10 आदमी को 10 घंटा किया. ओके, सब गरीब लोग थे और यू नो नोबडी हैज मनी इन द पॉकेट्स. ओके, और मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूटर एक भी नहीं हुआ. ओके, so count zero हो गया. So that will not serve my purpose ना. Okay, yeah, so yeah. Okay, so I'm not saying disregard or disrespect them and don't sell if it comes सामने से, but you know that push and pull. पुश भी करना है तो इट शुड बी रिच एंड एजुकेटेड क्लास. पुल में सामने से आ रहा है कोई मिडिल क्लास, वो उसको दे दो कम टाइम में, बट योर टाइम एंड एनर्जी शुड बी इन रिचर क्लास. ओके, एजुकेटेड क्लास. ओके, ओके, हाँ, ओके. एंड वन वन पावरफुल इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हेन यू टॉक टू पीपल ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बोल रहा हूँ, वेरी पावरफुल पॉइंट. ओके, नेवर ट्राई टू विन थिंग्स, never trying to win an argument. Okay, this is how I distribute